लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन में राक्षसों की संख्या बहुत है। हमें किस बात का भय है? अजी, आप कौन हैं? यदि अनुचित न समझे तो मुझे अपना परिचय दीजिए। हम अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और यह मेरी धर्म पत्नी सीता है। पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष तक वनवास आए हैं। यदि आप अनुचित न समझें तो हमें भी अपना परिचय दीजिए। अजी, मैं लंकापति रावण की बहन सुपर्णखा हूँ। सुंदरता आप मेरी देख ही रहे हैं। तीनों लोकों में अकेली हूँ। राजकुमारों की मुझ पर नजर पड़ी और मैंने किसी को अपने योग्य नहीं समझा। योग विधि रे पिता
यह संयोग विधि रे विचार माया रूप पुरुष कोई नाई मायान रूप पुरुष कोई नाई हो जाऊं लोग की हो माहे अब लग रही इसलिए कुमारी अब लग रही इसलिए कुमारी मन माना चाह तुम्हें बिहार सुन सुंदरी मोरिया बात सुन सुंदरी मोरिया बात आहे कुमार मम लग गात आहे कुमारा मम लग गात तेरा रूप देख कर चंद्रमा शर्मा गई और चुप गई रूप देख कर चंद्रमा शर्मा गई और चुप गई क्या करूं हे राम प्यारे तुझसे चित भरमा गया क्या करूं हे राम प्यारे तुझसे चित भरमा गया अजी आप मुझे अपनाइए जब तक जिंदगी है सेवा करती रहूंगी पुत्र राजा प्रभु
हाजी, आपने मुझे इस जंगली के पास भेज दिया है जिसे बात करने का जरा भी तरीका नहीं है। प्लीज आप मुझे अपनाइए ना।
कछुए तेरी नाक है, काले कौवे तुझे वो चलती फिरे, कछुए तेरी नाक है। तेरी नाक अजी, आप मुझे क्यों नहीं अपनाते हो? आपने मुझे क्या देखा है, उसमें कितनी कमियां हैं? मैं तो तीनों लोगों में अकेली हूँ। हाँ, अब कुछ मेरी समझ में आई। जब तक यह काली कलोठी इनके साथ है, तब तक मुझे नहीं अपनाओगे। पहले मैं इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के मुँह मोड़ के। ये राम जी मेरे यारा वादा निभाना, राम जी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। राम जी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के मुँह मोड़ के। राम मिर्चिया लगी